मेरी नज़र में तो इंडिया ड्रीम है। 2.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी 75 साल में बनी, अगले 7.5 साल में 2.5 ट्रिलियन आने वाले हैं। India's technology is only underestimated because India's technology doesn't have a label. The world in this country for startup changed when our Prime Minister called us that this is the startup India. Country's top leader understands and admires the contributions and acknowledges them. नए भारत में नए लोग आके काम करेंगे। तुम बदलोगे, एक बदलेगा, हम बदलेंगे, देश बदलेगा। Welcome to another exciting episode of NIJ Podcast with Ananya. I'm your host, Ananya, and today we have a truly extraordinary guest joining us. He's a trailblazer in the world of finance and technology, Fintech, the founder of PayTM Karo. Yes, it's Mr. Vijay Shekhar Sharma who's joining us today, the mastermind behind PayTM, India's leading Fintech platform, which is almost a household name in India today. With a relentless dedication to innovation and financial inclusion, he has reshaped the way millions of Indians interact with money. So if you're interested in fintech, mobile payment platforms, entrepreneurship, and the overall financial landscape of India, this is the episode to watch out for. A warm welcome to Mr. Vijay Shekhar Sharma. सबसे पहले तो thank you मुझे समझाने के लिए। अभी जब कैमरा वाले ने बोला roll, tell me the story of roll. Why do we say roll and start? So today we talk about digital world, and obviously the previous analog world had rolls, the film roll, and it was the most expensive thing to consume. So lights, camera, action, and after that roll, rolling camera. So rolling camera was rolling of the roll, and that is why the roll. And obviously today there is the infinite storage on cloud available literally to everyone. So now we just do it significantly. We're starting. Okay, wonderful. नहीं, I think जैसे आपने रोल बोला, household name, वैसी PayTM Karo is a household name. So, before we start with the more interesting, the more serious questions, one stupid question. आपका नाम विजय है. Does that give you some sense of, I don't know, does it keep pushing you towards winning all the races that you run? Wow. Thank you so much for asking this, because one upon a time I did think that my family name is Vijay Shekhar Sharma, full name. And in India, typically somebody is, Singhania, Malhotra or somebody. I'm a Malhotra. Okay. Sharma मतलब बहुत ही नॉर्मल पढ़ाकू फैमिली और पंडित जी की घर के लोग जिनकी जिंदगी में कुछ एक्शन होता नहीं है। तो मैं बचपन में सोचा करता था हमारा तो कुछ इसलिए नहीं होगा, हम तो शर्मा है। शर्मा कहीं दिखाई नहीं देता कोई। तो विजय एक तरीके से फिर उसमें एक वर्ड है which definitely means the victory, and I think it is a manifestation in it. I do believe that जैसे कि वैदिक मंत्रों का एक manifestation होता है, ऐसे ही आपके नाम का manifestation होता है. So I do believe that there must be an angle. It makes you feel that you're going to win whatever the problem is and you're not going to get stopped. So maybe this is due to some other reasons, but I do believe that there is a innate me which does believe that there is nothing that can stop you. You will win over any problem. Yeah. And you're meant to do something worthwhile. That is why you are here. जब भी कभी कुछ समस्या आती है, when there is a problem and I'm talking to my team, I'm on the stage, I only say one thing, that look, we are here not because we were supposed to be here. We are here because we can go from here. And that means that there is a journey ahead and there is a winning ahead. Yeah. So yes, maybe. Yeah, because that was like when I was preparing questions for you, I was like, okay, his name is Vijay. What a nice name. Vijay. Okay. This is Vijay, the founder for PayTM. So I'm going to say this, that it is, I think I've learned that this is more of a Bollywood thing. The era I was born, Amitabh Bachchan, angry young man, somebody who wanted to change the face of this country. And I think which you have in many ways. I feel privileged. And I think if that was the name that my father picked it up for, my mother and father, then I'm happy and proud for that. So starting with your mother and father. Okay. Of course, nobody would have guessed कि मेरा बच्चा बाद में जाने के बाद बड़ा होने के बाद पेटीएम का फाउंडर बनेगा. I think people would have not even conceptualized what PayTM really is 20 years ago, even further back. So how was childhood like? Did you
I mean, अब तो बड़ा innovation और entrepreneurship और ये सब, these have become words of common parlance. But when you were growing up in the Sharma family, in UP, in Aligarh, what were the expectations that your parents had from you? I think being born in a tier 2, tier 3 town, and I'm talking Aligarh, which is 3 or 4 town, and especially 20 years back, 23 years back, जब मैं college में आया हूँ, I can say that हमारी life की expectation थी कि एक job होगी. मतलब the peak was a good job. And I think this was not even expected that there will be a company or business. Right. And मैं उस जमाने की बात करता हूँ जब मैं 90 के दशक की बात कर रहा हूँ. In those days, doing a business was a negative thing. It was looked down upon. In fact, मैं आपको interesting बात बताता हूँ. मेरी मम्मी जब मैंने उनको बताया कि मैं जॉब छोड़ के बिजनेस करने वाला हूँ, तो उन्होंने मेरे को, जब मैं दोबारा अलीगढ़ गया उनसे मिलने के लिए, तो उन्होंने बोला भैया तुम नौकरी कर लो. I was like, अब क्या हुआ? मैंने अपनी मॉम से एक नेगोशिएशन कर रहा था, जब मेरी सिस्टर की शादी हो जाएगी तब तक मैं नौकरी करूंगा, जिससे कि घर में जो पैसे वैसे भेजने और जो ख्याल रखने वाली बात है वो सही है. एंड आफ्टर दैट आई विल डू व्हाट आई वांट टू डू इन माय लाइफ. आई हैड डिसाइडेड टू डू अ कंपनी इन कॉलेज. सो मैंने पूछा अब क्या हुआ? कि हमारे पड़ोसी बोल रहे थे कि इनके लल्ला की नौकरी न लग रही, जब हमारे वो बिजनेस meaning the guy is not getting a good job, that is why he's trying to do a business. It was so looked down upon. And I just cannot believe that it was so bad to be a businessman. And businessman was associated with somebody who's crooked, who was... Today's businessman is an entrepreneur who is serving the country. And that time it was looked down upon that you are definitely trying to cut corner and do something if he is to get money. And I'm very proud to say one thing, and I think this has changed in last 10 years. And I quickly want to tell you, this changed when our Prime Minister called upon the Startup India. Because in this country, I can also tell you, till 2010s, it was not fashionable to be an entrepreneur. In fact, there was no investor. More or less, you would go US only, then you will do something. That is why there is a crop of American Indians who are so phenomenally successful. But staying in India and trying to do something was not the thing. Right. I really want to tell you that the world in this country for startup changed when our Prime Minister called us that this is the Startup India. Yeah. And then the startup came in front. And then entrepreneurship became the thing. And I think that respect, when it came from the top, we also got from our families. Unless, otherwise, we used to be brass. I mean, you coming out of engineering college, you coming out of MBA institute, what is that you were seeking? There was a food chain, international job, domestic international job, or large PSU, large private sector job, when startup was not even a thing. Yeah. And now I can say that it changed. So back then, it was not even thought about, or I cannot say that I ever would have imagined it. And ek aur baat thi, access to capital. I don't think a middle class person ever had access to capital or could have. Right. I think today the dream is changed. Yes. Today we can talk that in India you can dream of a startup, to dream of a company, and you can dream of being an entrepreneur. In those days it was even not possible to have money. Especially for the first gen guys trying to figure things out. I want to tell you an interesting thing. I was in engineering college and... So talking about entering engineering, I read that you entered engineering college at the age of 15? Yes, because I completed my class 12 at the age of 14. So I was a 1-year drop. Okay, all right, okay. So I think this is all the great UP word, which allows not more than this. The age of class 12 is called not more than. It is not called minimum of this. So I think in early days, my school teacher would help me skip the classes, because I think my elder sisters used to go to school and I would read their books. So I sort of knew what is the next class book. So I remember when I was studying in class 3, I appeared at exam of class 4. Really? Thanks to UP board. Thanks to UP board. Because I think the teachers in the school were saying that I think your son knows. And I was a little early, as you can guess, at a 15 also. I completed class 12 as 14. Imagine if I would have completed 15, that was also young, because then I'm going. So my mom was like, no, he's already in school early age. आप इसको ज़्यादा क्यों आगे छोड़ रहे हो? तो बहन जी आप रहने दीजिए, अगर इसने नहीं पूरा करा तो पूरी चौथी क्लास में पढ़ ही लेगा. हम उसको एग्जाम चौथी का दिलवाते हैं. So I think I did not know this.
जब मैं अपने बच्चे को देखता हूँ और कुछ बच्चों को देखता हूँ और मैं पूछता हूँ कितने साल के हो, जब बोलता है 13 या 14 साल का, तो मैं सोचता हूँ मैं पता है मैं क्या बारे में पूरे कर चुका था। एंड आई थिंक ऑन इन माई सेल्फ दैट कुछ तो अब मैं कहूँगा कि घर में पढ़ाई का माहौल था। मेरे फादर टीचर हैं, तो हमारे यहाँ पे पढ़ने की बहुत बातें होती थी और एक तरीके से हमारी बेंचमार्क की सक्सेस की थी कि कितने अच्छे नंबर आए। तो मतलब you were judged based on your report जज card. नहीं, पिटाई होती थी। right. एक्सट्रीम डिसिप्लिन से आया हूँ मैं। सो वेल मैं कहूँगा कि इट वाज as they say luck, or is I would say the pedigree of family, where I was able to complete at age of 14, and then I had this movement of truth सुलाला हरदयाल के साथ। अच्छा। क्योंकि मैं हिंदी मीडियम से पढ़ के आया हूँ, तो अब मेरे को इंजीनियरिंग एडमिशन जो होते हैं वो सारे इंग्लिश में होते थे। अब देखो वो चाहे एग्जाम हिंदी में लिखा हुआ है, लेकिन आपको जो बुक पढ़ने की मिलेगी वो तो इंग्लिश में मिलती थी। सो नाउ इट वाज अ वेरी ट्रबलसम थिंग दैट यू आर अपीयरिंग एट एग्जाम इन इंग्लिश एंड व्हेन यू स्टडीड इन हिंदी। एंड दिस इज इन दिल्ली? दिस इज नो, मैं तो अलीगढ़ में हूँ। नहीं, आप अलीगढ़ में भी अलीगढ़ में हूँ और एंट्रेंस टेस्ट मुझे दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, IIT, रुड़की, ये सब देने हैं। ठीक है। उन सबके एग्जाम इंग्लिश में और आप हिंदी में पढ़ के आए हो। तो मैं लाला हरदयाल की बात ये बताता हूँ कि मुझे बाद में जब मैं पढ़ता था तब मुझे पता चला था और मेरे साथ हुआ कि मैं हिंदी और इंग्लिश की 2 किताबें साथ में पढ़ सकता हूँ। Okay. I can read 2 books together like this, and you can take an exam from me from 2 books. All right, my God. So मैं हिंदी में पढ़ रहा हूँ, ये प्रतिरोध है, ये साहित्य गुणावेग संवेग है, फिर यहाँ पढ़ रहा हूँ ओ मास मल्टीप्लाइड बाय it is momentum. Your mind is trained to translate and cross triangulate. Yes. And I think ये एक हमारे इंडियन लोगों के साथ अच्छी बात होती है, क्योंकि हम एक चीज को मल्टीलिंगुअल देख लेते हैं। ओह दिस इज समांतर पट संधारित्र ये हिंदी में है, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इंग्लिश में, यही चीज है वो जो सिंगल लैंग्वेज लोगों को नहीं समझ में आता कि सेम चीज को आप डिफरेंट तरीके से कह सकते हैं। सो दिस इज एन एडवांटेज इंडियंस है। इनफैक्ट माय मदर ऑलवेज सेज कि भाषा से या लैंग्वेज से इट हैज इट्स ओन वर्ल्ड व्यू, इट हैज इट्स ओन आउटलुक, इट इज नॉट अ कोडेड लैंग्वेज ओनली, बट सोचने का तरीका, नजरिया भी होता है। Totally right. मैं जब मैं बहुत सारा म्यूजिक सुनता हूँ, उसमें मैं भजन वाला म्यूजिक भी सुनता हूँ और मैं संस्कृत के गाने भी सुनता हूँ, संस्कृत के म्यूजिक सुनता हूँ, तब मुझे उनके जो जैसे मुकुंद माधव हरी हरी बोल, तो मुकुंद बोला फिर माधव बोला फिर हरी बोला, इसमें जितने मेटाफर लगाए, ये वर्ड क्यों यूज करे, इस सीक्वेंसिंग में क्यों यूज करे, इनमें कौन सा आपका अलंकार बना, कौन सा आपका वर्ड बना। ये आपने सही बोला कि लैंग्वेज गिव्स अ वे टू एक्सप्रेस योरसेल्फ एंड देयर इज अ वर्ल्ड टू इटसेल्फ। And I think this is what I also feel, that as a country we are privileged because of the rich languages that we have. Right. And I think this is the beauty of India, that language is so ingrained and language is so localized to every place. Right. People even living in India can understand that the same Hindi word means something else nearby, or some other word is said the same thing. Right. And that is why we are brain-wise, as Indians, we are far ahead of anybody in the world. I can say it any time. Yeah. जब एक बच्चा स्कूल में पढ़ने जाता है और उसको अगर गलती से बस में चढ़ना है, तो सिर्फ हमारे देश में ही होता है कि वो बस देख के समझ जाता है कि आगे जाएगी या पीछे जाएगी या रुकेगी नहीं रुकेगी। कई सब जगह पे ग्लोबल रूल है कि इस लाइन पे ही खड़ी होगी बस। दरवाजा अगर यहाँ नहीं खुला तो सब जगह त्राहिमाम। Very linear way of thinking. Everything is expected to meticulously work. Only in India you from your childhood are ready to think about all the possibilities and calculate on the fly. That is not possible elsewhere. So I'd say language, way of living, this makes us extraordinary country. मेरा कहना है कि देश को ना अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, हमारे लोगों को अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, इसीलिए जब अपॉर्चुनिटी मिलती थी और मिलती है बाहर जाके तो लोग इतना शाइन करते हैं। अब हमारे देश में जो चेंज आया वो ये कि हमारे देश में अपॉर्चुनिटी। परफेक्ट। सो यू लिटरली आपने सेज बना दी है फॉर माय नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड द पेटीएम इनोवेशन, आई नो आई एम जंपिंग बिकॉज अभी हम कॉलेज पहुंचे हैं, I guess Delhi College of Engineering पहुंचे हैं, and I was reading that you started a company while in college. What was that experience like, and what did that teach you? Classic problem of not understanding the language of teacher. तो टीचर जब पढ़ा रही है तो तारे जमी पर हो रहा है, your lips move but I can't hear what you say हो रहा है, सब ऊपर से निकल रहा है, ऊपर से निकल रहा है। अब टीचर ने अपनी स्कूल में हम टॉपर रहे, मैं टॉपर रहा और मैं आगे की डेस्क पे बैठूंगा क्योंकि मैं तो टीचर का फेवरेट भी हूँ। और इंजीनियरिंग कॉलेज में आते ही मेरे को चौक भी पड़ चुकी थी, यू
I'm asking you. और मुझे ये नहीं समझ में आया, मैं मेरे से पूछा. Not because I'm not attentive in the class, but I'm not understanding the words. Yeah. So the teacher, from there, from being humiliated in front of the seat to the back of the seat, I ended up going out of the class. And then, as luck would have had it, I was, instead of going to the canteen in campus, I was in the computer center. Okay. So at very young age, as a college, first year, second year, I was in computer center. And I was lucky, this is 94, 95, when the internet was taking off. So now I was in alt world where the internet was taking off in the West. And in India, I was an outcast who did not know what is being taught in the class. And I think this is where मेरी लाइफ में एक और चेंज आया. दरियागंज में सेकेंड हैंड बुक्स मिलती है, तो मैगजीन्स मिलती हैं. उनको जाके मेरे को तो हिंदी इंग्लिश पढ़नी आती थी, तो किसी ने मेरे को समझाया, देखो मैगजीन पढ़ो, उसमें अखबार पढ़ो, उसमें ना डेली शब्द आते हैं. तो मैं जाता था, अब मुझे मैगजीन अखबार पढ़ूँ, तो इसमें मेरे को एक मैगजीन, फॉर्च्यून मैगजीन आई, जो यूएस की थी, जो कि एमएससी वगैरह लोग खरीदते हैं, वो किलो में बेच देते हैं, और वो लोग वहाँ पे किलो में बेच देते हैं. लिटरली रद्दी में बेचते हैं, वो वहाँ पे 5-10 रुपए मिलती है. यही उसका सीक्वेंस ऑफ फूड चेन है. तो मुझे अभी भी याद है, मैं मैगजीन फॉर्च्यून दिखी मुझे, जिसपे लोगो दिखे हुए मिले कि डेल ये सब, तो मैं लेके आया. तो उसमें मुझे एक नई चीज लर्निंग मिली कि सिलिकॉन वैली एक जगह है जहाँ पे लोगों ने कंपनियां स्टार्ट करी गराज में, और वो गराज से स्टार्ट होकर इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां, वो मेरे को एकदम से हिट किया. घर की बात, जब अगर वो वहाँ बैठ के गराज में कंपनियां स्टार्ट कर सकते हैं, तो अब तो इंटरनेट है, हम यहाँ से बैठ के कश्मीरी गेट से कंपनी स्टार्ट कर सकते हैं. मैं दिल्ली कॉलेज कश्मीरी गेट में, तो मैं अपने हॉस्टल को सिलिकॉन वैली का, ये सिलिकॉन वैली है. दिस इज वेयर वी आर, एंड दैट इज व्हेन आई स्टार्टेड टू ड्रीम ऑफ स्टार्टिंग अ कंपनी. एंड दैट इज आल्सो द टाइम व्हेन आई हैड टू मेक अ डिसीजन, because I was not good in my academic scores. So I sort of was iffy if I would get a good job because of the scores. So I said, यार अब वो नहीं चला तो एक काम करते हैं, अब ना पूरी तरह से all in इधर जाते हैं. Why be the one who takes a job लेते हैं. और third year of college में people start to prepare for GMAT, GRE. Yeah. This is a little bit of awkward time that happened in my life when my roommate told me, because I was working on something which was, let's say, not preparing for an exam, and he was preparing for CAT. So he literally told me, देख विजय, तेरे को तो आगे जाना नहीं है, मुझे नहीं मालूम तू क्या करेगा नहीं करेगा, तू ना कमरे में से बाहर जा. So मैं कॉमन रूम में बैठा होता था, मैं मैगजीन फ्लिप कर रहा होता था, और मेरे अंदर कैसे कैसे ख्याल आ रहे होते थे कि अपनी ज़िंदगी में पैसे नहीं है, ये हालत आ गई. Because my family did not have 2,31,000 rupees that an IM would have taken for education fees. Forget about going Stanford, which I knew was the Silicon Valley thing, that was like 22 lakh. मेरे लिए ना वो बहुत दूर हो चुके थे. तो अब मेरे दिमाग में बस यही सपना रहता था कि क्या करूँ मैं. तो मुझे लगा कि जब एंड जर्नी में जाके कंपनी में ही जाना है, तो हम एक कंपनी स्टार्ट कर देंगे ट्राई. So that is how I started in third year a company in my college. And you were how old? I was third year of college, so 18? You can imagine. Less than 18. Yeah. And now the funny thing, interesting thing happened. So हमने मेरे अपने फ्रेंड के रिलेटिव के नाम पे, क्योंकि मैं बैंक अकाउंट तो थे नहीं. अच्छा. तो अब एक और इंटरेस्टिंग किस्सा था. आप अलीगढ़ उत्तर प्रदेश से आए हो, दिल्ली में रहते हो, और एक कंपनी स्टार्ट कर रहे हो, आपको कस्टमर कहाँ से मिलेगा. तो उसमें भी मैंने बहुत इंटरेस्टिंग हैक ढूंढा. I used to see these job advertisements of internet technologies, जिसमें लिखा होता था HTML डिजाइनर चाहिए, अच्छा, प्रोग्रामर चाहिए, पर्ल CGI वगैरह दोनों की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी. तो मैं उसमें जॉब इंटरव्यू में जाता था, और जब वो कहते थे क्या तुम्हारी एक्सपेक्टेशन है सैलरी की, तब मैं बोलता था सर मेरे पास ना, मैं कॉलेज में पढ़ता हूँ, तो मेरे को जॉब नहीं चाहिए. फिर मुझे लगा आपके पास काम होगा, तब आप इसीलिए रिक्रूट कर रहे हो, अब मेरे को काम नहीं दोगे. अब मैं कॉलेज में कंप्यूटर सेंटर में कर दूंगा. So, दो तरह के लोग होते थे, जो पहले तो सरप्राइज होते थे कि ये क्या हुआ हमारे साथ, और इसको बड़े नेगेटिव तरीके से यू वेस्टेड माय टाइम. दूसरे होते थे, वो दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, इस कॉलेज में पढ़ते कर लोगे, कंप्यूटर है, ट्राई करें. सो स्लोली आई स्टार्टेड टू गेट वर्क. मेरा बहुत सिंपल सा था, जब हमारा काम का सप्लाई कम हो जाता था किसी ग्राहक से, कस्टमर से, तो मैं एक और जॉब इंटरव्यू में. अच्छा, ओके, हाँ, सो यू ट्राइड गेटिंग वर्क. This was my hack, because I was like, ये कहाँ पे काम है, कहाँ वहाँ कैसे पहुँचूँ जहाँ काम है, उसको समझाना कि काम है. फिर उसके बाद you have to tell him that you can do it. तो over the period portfolio create हो गया. I still remember internet portal बनाई हमने उन दिनों में, web search engines बनाए, बहुत कुछ बनाया. And by the time I was getting out of college,
I had a optimum sized revenue also. So then, by the way, we did election coverage of Vajpayee sir's election. Oh. And that was a technology that we built at the back end, internet, indiadecides.com. We got break at different media institutes. हमने content management system 98 में बना के 99 में बना के media companies को sell किया हुआ है. So you can imagine that is that age. Yeah. And over the period, we got acquired. Okay. Less than 1 year, I sold my company for $1 million. At that time? Wow. I was not yet a not teen. And that money, we four of us, उन्होंने फिर हमें split करा हम दोस्तों के बीच में and so on. So I think the life was totally shocked. My father was not able to believe. And what do you mean by तुम्हारी कंपनी एक्वायर कर रहे करते क्या हो तुम? तो हमारे घर में तो कभी ऐसा हुआ नहीं. तो हमारे बुआ जी के लड़के जो दिल्ली में रहते हैं, सब पूछा गया, उनको बोला गया देखिए मनीष बोले तेरा घर का नाम मनीष की थोड़ा कंपनी में देख के आइए क्या हो रहा है, कर क्या रहा है लड़का, करता क्या है लड़का, क्यों उन्होंने इसकी कंपनी एक्वायर करी, क्या कंपनी करती थी. तो उन्होंने जाके देखा कि ये तो एक अमेरिकन एमएनसी थी वो, जिन्होंने हमें एज अ एक्चुअली हायर किया. तो हमारे को टेक्नोलॉजी मिली तो बड़े खुश हो गए, अच्छी जगह काम करता है आपका लड़का, बड़ी अच्छी है सब कुछ. सो माय फादर गिव एन ओके, ठीक है आप इसे कर सकते हैं. अच्छा, आप green light will. It was a little confusing that at that age, how would you have something like this done and so on. Another very interesting moment happened in that was that company was US based. So I was going to get a US visa, and that gentleman at the US visa window asked me that how much do you earn? So there was a salary, and again, I want to tell you the salary that I used to earn 1 year experience, 36 lakh rupees a year. That's not a small salary even today. Yes. Because I was getting two monies. One was money that they had to pay me for the company, and another money they had to pay me for the job. So now that guy was like you have a so there was a joint offer letter and so on. So, and they were probably not trusting the offer letter. So they said, "You have a bank statement for this?" I said, "No, I don't have it." So he said, "Okay, cancel." Last time. Really? Wow. Because he didn't believe that you could earn. He said, "You are not that age. You're not that experienced for this. Is this even real?" Yeah. So फिर मैंने बिल्कुल एंग्री यंग मैन टाइप से डिसीजन लिया. अब हम अमेरिका नहीं जाएंगे, अमेरिका हमें बुलाएगा. Oh, that. तो आप मानेंगे नहीं, मैं 98 में 99 में जब मेरा यूएस वीजा रिजेक्ट हुआ, मैं 2008 में गया जब मेरे को इंटेल ने मेरी कंपनी में इन्वेस्ट किया और उन्होंने सीईओ समिट के लिए इनवाइट भेजा. मेरी एक ही कंडीशन थी कि वीजा की एप्लीकेशन की लाइन में नहीं लगेंगे, डिसाइड करके भेजेगा. सो आई थिंक द अर्ली कंपनी वाज अ लिटिल outcast for everyone, not just for my family but also as a situation. This is the time when internet was taking off. India was talking about internet and we were in a total third world. And so I started this company, which is the company today I'm talking about, with that money as my seed capital. And that is when 197 Communications started in 2001. 2001. So I was there for 1 year and then I started 2001. And this company, obviously gone through lots of good, bad, ugly days. The single decision I had was that this will be a 100-year-old company in front of me. Yeah. This will be a legacy for this country. This will be a legacy for us. Because जब मैं देखता था ना Ericsson since 1937, तो मैं मेटाफोरिक नाम ले रहा हूँ कंपनी का और उसका, और ये कंपनी इतने साल से, यार ऐसी कंपनी मानी इसका दुनिया भर में नाम हो और जो ये सिंस बनी हो. तो मैंने इसलिए ये मैंने बनाई. और फिर जब बहुत लोग पूछते थे कि जब आगे पीछे बहुत होता है इसे छोड़ दो, ये कर लो, ये नहीं छोड़, हमने निकलने के सारे दरवाजे बंद कर दिए, बस आगे. नहीं, आई थिंक मतलब कमिंग टू पेटीएम, सो मेनी क्वेश्चंस. सबसे पहले तो theoretically, in your mind, in your dreams, was there a eureka moment? Did you conceptualize a mental model? क्योंकि आज से जब पेटीएम नहीं था, डिजिटल पेमेंट्स नहीं थे, इस चीज को कंसेप्चुलाइज करना भी मुश्किल है. So was there a clear cut watershed moment, or you were already on the journey and it sort of became an organic output? Nothing in the world has happened if it was not a dire need. And I was, when I started 2001 till 2010, I was working with telecom operators. And I'm talking about, you remember those days, feature phones, flip phones. So we used to do a lot of content for them and SMS, ringback tones, you remember those days.
and we were the technology company, and we will build this business there. Interesting insight on that business I want to share, because as an audience and as a fellow entrepreneur, I want somebody to know this. It's a critical question, and I'm going to answer about Paytm in a few seconds after that. Because there was nobody to give money, and the money was my own, whatever the money that I saved, few lakh rupees, and that money would go away very soon because you don't have money. So I learned a different lesson, that I was able to serve my customer, get the bills, but not the cash. Meaning, वो लोग टाइम पे पैसे नहीं देते. इसको कहते हैं कैश फ्लो. तो मैं प्रॉफिटेबल था, बट पैसे नहीं थे. लिक्विडिटी नहीं थे, कैश फ्लो नहीं थे. So this is what an entrepreneur misses if you are not a financial background person. That being profitable is a half truth. It is the cash that you have that makes it whether you have profitable or not. Okay. So मेरे पास ऐसे करते करते डिफिसिट आ गया करीब 48 लाख रुपीस. और 48 लाख रुपए के डिफिसिट में अब मैं लोगों से लोन लेते लगा के मैंने ₹2 प्रति माह वाले जो 24% के लोन होते हैं वो वाले भी लिए किसी से. और 8 लाख रुपए का लोन था मेरे पास, ये भी याद है. अब आप पहले तो आपको कैपिटल नहीं मिल रहा था, अब आपकी सूद भी जा रही है, इंटरेस्ट भी जा रही है. सो इट बिकेम अ नाइटमेयर. एंड माय फादर, because I took it from some family, distant family, was extremely uncomfortable. So he said, इसको बंद करिए, नौकरी करिए और जॉब करिए और इसको पे करिए. So this is the time that I also met someone who ended up giving me literally 8 lakh rupees for 40%. Because और मैंने उनके लिए कुछ काम किया, तो मैं लिटरली एक दिन की कंसल्टिंग करा करता था कि किसी का ईमेल सही कर दिया, किसी का इंटरनेट लगा दिया, किसी का कंप्यूटर सेटिंग किया. I used to do that. And I would do it for these international journalists who would live in Netaji East. So I'll go to one of those, my email is not working. So they will call someone and I will be the chosen assistant. So I remember those days. So, oh ma'am, your internet is not working, all your email is here. Oh, thank you so much. How much it is? 500 rupees. And so I was doing this hand to mouth, holding myself when the rest of the company was finding its way through, when the payments were not happening. So this gentleman, I did some work for him. He asked me, विजय जी आप हमारे ना CEO बन जाओ. तो मैंने बोला नहीं सर, मेरी एक कंपनी है. नहीं आपने बहुत अच्छा काम किया है, देखिए. So then I told him that I have a company and if you want to, you can help me there actually. So then he learned, then he heard the pitch. But the gentleman was not from the technology background. तो उन्होंने मेरे से बस एक ही बात बोली, देखिए आप जो करते हैं उसमें बहुत पैशन है आपका, ये तो मैं समझ गया हूँ, बट क्योंकि मैं टेक्नोलॉजी का नहीं हूँ तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा क्या होगा क्या नहीं होगा. तो इसको आपको क्या चाहिए? तो मैं बोला मुझे 8 लाख रुपए का लोन चुकाना है. तो लिटरली उन्होंने 8 लाख रुपए मेरे 40% इक्विटी के लिए पेटीएम के, ये वो कंपनी है. 8 लाख रुपए में मैंने 40% इक्विटी दिया. अब मैं जो बताना चाहता हूँ वो ये बताना चाहता हूँ, हम सब लोग अपनी सारी स्टेज को मैक्सिमाइज करते हुए जाते हैं, ऑप्टिमाइज मैक्सिमाइज करते जाते हैं. बहुत बार थ्राइविंग एक अपॉर्चुनिटी होती है, बहुत बार सर्वाइविंग ही ज़िंदगी की सक्सेस होती है. मेरे लिए वो 8 लाख बहुत मैटर करता है क्योंकि उसने मेरे को सर्वाइव होने दिया. अन्यथा मेरी फैमिली और जो भी कुछ सिचुएशन थी, मैं शायद ये कंपनी भी, आगे की बात तो पीछे है, मैं शायद ही कुछ भी नहीं कर पाता. तो इसलिए जब भी कभी लोग पूछते हैं कि क्या वैल्यूएशन होना चाहिए, क्या प्राइस होना चाहिए और क्या मुझे इतने में डाइल्यूट करना चाहिए, मैं पूछता हूँ आप अपनी सिचुएशन देख के देखो. बस 10 ऑप्शन है तो जरूर मत करो, नहीं है तो फिर यही तो ऑप्शन है, फिर कैसा क्वेश्चन है. So this is what I wanted to share with beautiful perspective entrepreneurs. That's many a times, and I take this as a lesson for me all the time, that जब चौके छक्के लग रहे हैं तो मारने चाहिए, और जब बाउंसर आ रहे हैं तो अपना विकेट बचाना चाहिए और सर भी बचाना चाहिए. In other words, you're not supposed to be having a hit every time, but many a times you have to be defending yourself. From there, this 8 lakh rupee changed a lot of things for the company. We became a very good as cash flow and operating and so on. And India's telecom was booming in those days, 2005, 2010. When 2010 happened, I was obviously agitated by telecom operators' this behavior that, big companies do not treat their small suppliers so good because you are very small company for them. So it's not as a company bad, but it's a structural thing. So I was always dreaming that there has to be something that I have to do with the customers. Instead of going through telecom operator, I would rather want to do it with customers. So when I saw this smartphone magic when Steve Jobs showed, and 2008 when I went US, I was like, whoa, yahi hai wo. This is what will change the way. So I
started to think about what will we switch from this company to a company for a smartphone age. तो हम content करते थे तो हमें लगा कि हम gaming content ये सब करेंगे. Again, my logic was that these device companies, operating system companies will hold that. जैसा आप जानते हो, और global content है. मतलब जैसे Netflix अगर एक global है इस टाइम पे और YouTube global है, तो इंडिया से आप इंडिया के लिए नहीं बना सकते. So international platform will be the platform for country and they will have just. So I gave up on contract. Then I thought कि शायद advertising बनेगी. Then I learned that global large advertising platforms, namely Google, Facebook, etc. exist, so they would do it. Yeah. And slowly I reached a milestone where I learned that payment is a value chain. Okay. Which will be local to the country. If there will be success for smartphone business model for apps, there will be an obligation of local payment system. So round of selection, I reached payment system. So I now knew that what is a payment system needed, except that I did not know how and why. Customer क्यों करेगा? तो मैं ऑफिस आ रहा होता था सोचते हुए कि क्या चीज़ करें जिससे कि कस्टमर अपना अकाउंट खोले, क्यों खोलेगा, क्या करेगा. So slowly, steadily, one day this eureka moment happened when I found out that I think the mobile top-up is the most ubiquitously needed thing. और सारे फ़ोन वाले लोग इस देश में प्रीपेड ही खरीदते हैं. और जिनके घर में प्रीपेड नहीं है, मेरे जैसे और आपके जैसे लोग जो पोस्टपेड हैं, उनका कोई ना कोई आसपास प्रीपेड है. तो प्रीपेड बेस्ड है. तो my theory of Paytm started with selling prepaid top-up to the consumer. Okay. And then my theory was that when the customer will be buying a top-up, he'll open an account with us. And this way I'll get a customer. Once I have customer, I can go to the merchant. So then when I got the customer and when I saw this ample enough customers on our platform, and then step 2 came that we will bring it for the merchants. And interestingly, merchant business, if you know, in this country was online. I'm talking now 2014, 13, 14. And this is the time when India's internet e-commerce evolution was like happening. Right. Happening stands for there was $1 billion funding, $100 million funding. So everybody was rushing towards commerce. And मेरे देश में मेरे को लगता है कि हमारे देश का commerce ना छोटा दुकानदार से ना. So I mean, all the background that you're learning from me, I always wanted that guy to win. So I stand for that small guy. I stand for the last guy. I stand for the person who runs this country's economy but doesn't get the support of every technology or every other asset and service that happens to the big guy. So मेरा ये मानना था कि जब ये ऑनलाइन बेचेंगे तो इनको सपोर्ट करते हैं. तो इनकी दुकान पे डिजिटल पेमेंट से स्टोरी स्टार्ट करते हैं. एंड दैट इज व्हेन वी लॉन्च द QR बेस्ड पेमेंट. अब ये भी लॉन्च करने के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्सा आया कि हम लोगों ने पहले फ़ोन टू फ़ोन ट्रांसफ़र P2P करा था. तो एक हमारा टीममेट एक दिन हमारे ऑफिस में आया और ऑटो रिक्शा में 67 रुपये 67 रुपीज़ का बिल था. I said, it is a very interesting number because I still remember that. And then he wrote this in a team group. कहता है मैं आज ऑफिस आया, the auto rickshaw guy asked, I said 100 rupees. So he said change नहीं है. change नहीं. तो ऑटो रिक्शा guy told him, आप पेटीएम में आए, पेटीएम ही कर दो. And the guy says कि पेटीएम कर दो. The auto rickshaw told, I said आपको पता है क्या होता है? कितना है? आपको नहीं पता क्या होता है? अच्छा. So I was like, whoa, we have a product that common people have started to understand, and this is now reached a place where we probably need to expand on it. Right. So quickly हमने फिर प्रिंट आउट निकाला QR का और नोएडा में अपने ऑफिस के आसपास दुकानों पे रखा. और हमने कहा आप देखिए इसको लगाइए पेटीएम एक्सेप्टेड एयर, इसलिए लिखा उसके ऊपर कि यहाँ पे पेटीएम एक्सेप्टेड एयर से लोगों को पेटीएम ऐप खोलेंगे, नीचे कुछ तो करेंगे. एंड वन थिंग लीडिंग टू अदर, द मूवमेंट हैपन टू मी व्हेन आई वेंट टू अलीगढ़. एंड जब किसी ने बोला कि भैया आप पेटीएम यहाँ नहीं लगाओगे, तो मैंने कहा तुम्हें मालूम है पेटीएम क्या होता है? हाँ, पेटीएम में से फोटो खींचे वहाँ को. I was like, okay, now you understand. So the guy was able to say that you have to click a photo of it from Paytm app. And I was like, whoa, we are underestimating where it is reaching. Potential. So the journey started with an obligation that you have to build a mobile payment business from a consumer's B2C business. And then the acceptance happens because customer ने खींच के हमसे कहा, आओ इधर आओ, इधर आओ. पूरा uptake हमें surprise करा. And I would say that this is the power that India has. India's demography is. India's demography is its biggest strength because they are ready to change, ready to embrace, ready to adapt, challenge, ready to adapt. Right. That is the success of Paytm, is that I kept listening them. I kept seeing them, I kept hearing them.
and whenever somebody said something, we were expanding on it. Right. And actually the fact that Paytm कर दो, वो उस ऑटो रिक्शा वाले की देन है, क्योंकि हमें नहीं मालूम था इसको, मैं क्या बोलूँगा, पेमेंट कर रहे थे, पेटीएम से पेमेंट कर दो होना था, उसने बोला पेटीएम कर दो, तो मैंने कहा उसने बोला पेटीएम कर दो। अच्छा, तो उसे मालूम था पेटीएम करना इसको कहते हैं। What is the act of पेटीएम करो was defined by that auto rickshaw. Wow. So a true, I don't know, grassroots discovery of what the word is. Ekdam. And otherwise you were saying that you can make a payment by scanning this QR code using our app. Right. Okay. So, it's a both movement of eureka to a movement of discovery, but I would rather say it is genuinely a success of India's consumers who wanted something. Right. And मेरा ये मानना है कि हमारे देश में ना, everybody wants to grow towards a success and something of a better life. And that is the innate youth. You want to live a better life from what you come from. You want to do better. You have energies. You want to embrace something new. And that is a moment when the opportunity matters in the country. Yeah. I think I feel privileged being born in a country at a time when not just a demographic dividend is there, but the opportunity exists. Right. मेरी नज़र में तो मैं ये बोलता हूँ बार बार अपने देश में लोगों को कि देखो, एक टाइम हुआ करता था अमेरिकन ड्रीम कहा जाता, मेरी नज़र में तो इंडिया ड्रीम है। 2.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी 75 साल में बनी, अगले 7.5 साल में 2.5 ट्रिलियन। Right. So we've reached 2014-15. मतलब I'm just thinking, मुझे याद है एक उस समय बड़ा आर्टिकल बड़ा ट्विटर पे भी चला था। So 16 तक demonetization के टाइम के दौरान, and you know of course Paytm literally sort of boomed, and a senior Congress leader पीछे राम जी had said कि मतलब आपको लगता है कि मतलब गांव में, I think he'd taken an analogy of कि एक बूढ़ा आदमी, an old age person, आपको लगता है वो दवाई खरीदने के लिए आप उनको जो है पैसे, वो अपने कैश से दवाई ना खरीद पाए, यू आर कार्ड से खरीदेंगे। हाँ, कार्ड, आपको लगता है कि they'll use digital payment। I think उन्होंने कहा था कि कार्ड से और पॉस मशीन वहाँ लगेगी। तो this is the obligation of incumbent to understand. नए जमाने में नए तरीके से होगा, पुराने तरीके से नहीं होगा, ये सच है, लेकिन नए तरीके से होगा, ये भी सच है, होगा और नए तरीके से होगा, ये भी सच है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि that when this was a question, and I was also asked, I want to tell you that many people asked me that, do you so much believe in it that you are throwing so much of marketing dollars on it that you are talking? I said, अगर हमारे देश की इकोनॉमी को डबल होना है और वो 2.5 ट्रिलियन की बननी है, तो कैश में तो बन ही नहीं सकती स्ट्रक्चर। हम अपनी जेब में तक कैश लेके नहीं चल सकते। We will have to move to this. I wonder what will it be, but I definitely want to take my chance to put this as one of the option. So I used to not say that होगा नहीं होगा, but I used to say कि ये तो जरूर है कि ऐसा कुछ होगा, अब ये होगा या कुछ और होगा वो सामने। Got it. So एक और इंटरेस्टिंग बात उस समय पे हुई, हिंदी भाषी से, तो एक मुझे अभी भी एड कैंपेन याद आ रही है जब आप ये बोल रहे हो। ये शायद मैंने अखबार में पढ़ा, तो मैंने बोला कि ये हम लोग हर ऑल्टरनेट डे में एक नया एड कैंपेन, एक नया एक्सपेंशन प्लान और एक नई चीज़ नई तरीके से कैसे लोगों को पहुँचे प्लान कर रहे होते थे। सो आई रोट वन लाइन एंड आई सेड, तुम बदलोगे एक बदलेगा, हम बदलेंगे देश बदलेगा, पेटीएम करो। ऐसे मैंने एक टैगलाइन लिखी और हिंदी में लिखी, तो हमारे इंग्लिश के न्यूज़पेपर वालों ने तो मना कर दिया इसको छापने से। तो आई वाज अनकंफर्टेबल विद इट। ऐसे नहीं, आप इसको छपाइए। और ये मेरी नज़र में मूवमेंट ऑफ ट्रूथ था व्हेन वी सेड दिस, ऑल्दो वी डिड ट्रांसलेट इट इन इंग्लिश दैट व्हेन वन चेंजेस इट इज़ प्रोग्रेस, व्हेन ऑल ऑफ अस चेंज इट इज़ अ रेवोल्यूशन, एंड पेटीएम करो। And I think that is the call, hierarchy call this country needs, deserves, wants. हमें एक ऐसे लीडर की तलाश रहती है जो हमें गाइड करे, क्योंकि हमारी हिस्ट्री में ऐसे मैजिकल लीडर नहीं रहे। ये तो मैं कहूँगा पिछले 10 साल में हमारे देश में ऐसी एक लीडरशिप रही है जो कि एक तरीके से सबको आगे बढ़ने को बोलती है और होप, एक्सपेक्टेशन, परसुएशन, परसिवरेंस, और फिर रिजल्ट मिला है। एक नहीं, दो नहीं, 10 बार रिजल्ट मिला है, तो फिर वो कॉन्फिडेंस भी आता है कि हाँ अगली बार ये तो अबकी बार ये बिल्कुल करेंगे। तो वो जो कॉन्फिडेंस है, इंडिया की डेमोग्राफिक डिविडेंड का एडवांटेज लेने के लिए हमें डिसाइसिव लीडर चाहिए। हमें वो लीडर चाहिए जो लीड कर सके, क्योंकि यंग को लीडर चाहिए होता है, फिर बाद में वो खुद लीड करता है, उसको गाइडेंस चाहिए होती है।
और हम उसी एज में हैं। तो मेरी नज़र में जब हमने ऐसी कुछ कॉल करी, तब तक एक एम्ब्रेसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, एम्ब्रेसिंग न्यू हैज़ हैपेंड। एंड आप जनधन आधार को देखो, मतलब किसने सोचा था कि हमारा कंट्री एक ग्लोबल बेंचमार्क बनाएगा टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में। राइट। मतलब हम लोग बात करते थे सिर्फ अमेरिका, जापान और ऐसे कंट्रीज़ की कि वहाँ पे होता है, देखो जाके क्या होता है। अब हमारे देश में वो लोग आके देखते हैं कि क्या होता है, ऐसा कैसे हो सकता है। No, very important. You spoke about the environment, right? The timing, the environment, the policy environment. अगर 2014 से आज 2023 तक की जर्नी देखें, and you spoke about the importance of leadership, and I mean, at a macro level, where do you think and how do you think, say, top 4 or 5 big, changes or big interventions or parts of the vision that Prime Minister Modi had for India, which you think has sort of led us to such an environment that whether it's fintech, startups in different areas, they're all booming and blooming. So what do you think what has Prime Minister Modi gotten right and what has really worked? I think deep down, this very assumption and this very belief that India will not be a country ruled by, and when I say India's business environment, I say India's economy, only a few. It will have many, many vibrant young entrepreneurs. I think that was the decisive change and the beginning of what has led to this excitement in the country. When our Honorable Prime Minister chose to call Startup India as a country's mission, when he called Digital India as India's purpose, I think the country embraced, and then we became the first citizen. पहले हम थर्ड सिटीजन कहे। हमारी कंपनी में वो लोग आते थे जो बड़ी कंपनियों में, बाहर की कंपनियों से, देश की कंपनियों से उसके बाद बचते थे। अब हम जाके वहाँ पे पहले दिन आते। पीपल बिलीव इट। टैलेंट जो हमारे देश से पहले बाहर जाया करता था, अब वो देश के लिए काम करता है, बिकॉज दे अंडरस्टैंड दैट कंट्रीज गवर्नमेंट, कंट्रीज टॉप लीडर understands and admires the contributions and acknowledges them. Today, the government's whole of infrastructure and the different government departments have a acknowledgement, appreciation and visibility of. अगर हम बचपन में याद करें तो उस टाइम की जब वो कोई बिजनेस मीट होती थी तो उसमें मुझे तो नहीं लगता कोई अलीगढ़ से और कोई कानपुर से और कोई वहाँ से कोई दिखता होता हो। सब व्यापार मंडल के लोग ही कहलाते थे वो लोग, बड़ी जगहों पे बड़े लोग होते थे। तो आज आप देखिए कि अब चाहे मैं अलीगढ़ से आया हूँ, चाहे रितेश आया है उड़ीसा से, चाहे कोई और कहाँ से आया है, हम सब लोगों को जो अटेंशन मिलती है वो इसलिए नहीं मिलती क्योंकि हम एक बड़ी फैमिली या बड़ी सरनेम के हैं, इसलिए मिलती है कि हमने कुछ करने की अटेम्प्ट करी है, कुछ करने की क्षमता रखी है और कुछ करके ट्राई करा है। मेरी नज़र में ये सबसे बड़ा चेंज है। नया बिजनेसमैन पैदा होगा इस देश में नया काम करने, नया बिजनेसमैन पैदा होगा नया काम करने के लिए। वाह। नए भारत में नए लोग आके काम करेंगे, जिन्होंने पहले से कंट्रोल करके रखा हुआ है सिर्फ उनके लिए नहीं है। ये बहुत बड़ी चीज़ है। ये कॉन्फिडेंस देती है एक आदमी को, एक नए बच्चे को, एक नए एंटरप्रेन्योर को कि मैं भी इंडिया, मैं भी भारत, मैं ही सिर्फ कस्टमर नहीं हूँ, मैं भी बना सकता हूँ। फिर उसके बाद जब एक पॉलिटिकल विल होती है, रिफॉर्म्स आर कॉम्प्लेक्स, रिफॉर्म्स हैव इन अ कंट्री ऑफ बिलियंस, when people compare us to Singapore or some small country like UAE, I wonder, I say कि ये तो बिल्कुल एक छोटी-छोटी कॉलोनी के बराबर है। East Delhi. I'm sorry to say that is not called governance. Governance तो तब हो जब आपके अंदर पूरा यूरोप समा जाए और पूरा वो समा जाए। आप देखो कितनी consensus in Europe is such a big issue. Yeah. Running a federal government in this country is a next level of challenge ahead of that. So we are talking about political will, political will to change, political will to reform, political will to bring a change that you believe will take forward. And remember this, any change, while it may be for the good of the country and correct thing, it will definitely cost certain other people. So it is extremely tough to have the balancing act. Right. And here comes that political will, कि इनका भी ख्याल रखेंगे लेकिन यहाँ जाएंगे. Right. और मैं एग्जांपल लेना चाहता हूँ जीएसटी का। ये तो मतलब वंस इन अ कंट्रीज हिस्ट्री में भी एक ही बार होता है वाला चेंज है। इट इज़ द पॉलिटिकल विल टू डू इट। आई एम टोटली एग्रीइंग दैट देयर वर 10 थिंग्स दैट कुड हैव बीन डन बेटर, बट फाइनली आज तो हम पहुंच गए ना। यस यस। एंड कितनी भी आप सही चीज़ कर लेते 10 में से और 10 छूटती। हाँ. तो
ये जो विल है कि हम इसको ना फेस कर लेंगे, करते हैं, आप करिए, राइट, वो जो शब्द मैंने सुने ना कुछ मीटिंग्स में, आप करिए बाकी, वो मुझे लगता है बहुत कॉन्फिडेंस आता है। सो जैसे ये जो टैक्स रिफॉर्म्स की खत्म कर रहे हैं, फिर इसके बाद हम ऑब्वियसली, मतलब अब तो मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, मैं देश में मतलब घूमने जाता हूँ, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। मतलब किसी भी दशक में ऐसा नहीं हुआ होगा कि देश के कोने कोने में इस चिकनी मक्खन जैसी सड़कें बनी हुई हैं। मतलब रोड देखिए, रेलवे देखिए, एयरपोर्ट देखिए। हम लोग ऋषिकेश में गए तो जॉली ग्रांट एयरपोर्ट गए, मैं उसको देख के सोच रहा था, मैंने कहा भाई ये तो LA से बढ़िया एयरपोर्ट है। मतलब इसका टर्मिनल तो इतना स्वाइंकी और न्यू है। दिस इज अमेजिंग, which is factually true. I know an airport. लाइक ये क्या हो रहा है देश में। जॉली ग्रांट एयरपोर्ट इज नाउ अहेड ऑफ अमेरिकन एयरपोर्ट, यू कैन नॉट बिलीव। ऑरेंज काउंटी एयरपोर्ट जाओ, बिल्कुल सड़क पे कोने में लगा हुआ लगता है। सो द पॉइंट आई एम टेलिंग यू इज दैट द ड्रामेटिक इम्प्रूवमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर, when the private necessarily was not investing so much, so government ended up spending and expanding so incredible infrastructure. This is impeccable. पहले हम कहा करते थे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, आज हम कहा करते हैं देश की लीड इंफ्रास्ट्रक्चर। ये देखिए डिफिसिट से पॉजिटिव में आ रहा है, एक चेंज है। ये सब चीज़ें ना एक मुझे लगता है विल का काम करती है। विल होती है, एक लीडर की विल होती है, एक लीडर का परसुएशन होता है, पर्पस का बिलोंगिंगनेस होता है, और यही कि हम क्या कर रहे हैं। नहीं तो देखिए, मैं अब किसी और के बारे में तो क्या ही बोलूँ, मुझे तो बस ये लगता है कि मैं तो गोल्डन एज में हूँ, तो लकी प्रिविलेज फील करता हूँ इस टाइम पे हूँ। इस दशक में जो हुआ है, मेरा मानना है कि 2 दशक अगर इंडिया इसी तरीके से रहा तब तो फिर हम पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, और डेफिनेटली wow. We talking of government schemes, and you come now from the payments, and now you're into the business of payments, financial inclusion. Talking of financial inclusion, how do you see Jan Dhan Yojana as a transformation in financial inclusion? The formal financial system starts with the beginning of having a bank account. And the very fact that you don't have bank account, you can't do anything. कहानी वही खत्म। मतलब मैं तो अपना QR की स्टोरी, जब मेरे से लोग पूछते हैं कि आप 0% पे पेमेंट चलाते हैं, तो मैं जो बात बोलता हूँ वो जनधन से कैसे कनेक्ट होगी आप देखिएगा। मैं बोलता हूँ कि हमारे देश की प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ जो लोग हैं, अब आप सड़क पे कुछ सब्जी बेचते हैं, कुछ सड़क पे दुकान चलाते हैं, आपकी आइडेंटिफिकेशन नहीं है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन होता है म्यूनिसिपल में, हो सकता है आपने वो भी ना किया। तो अगर भारत सरकार चाहे भी, अगर फाइनेंशियल सिस्टम चाहे भी, तो आपको कुछ एडवांटेज और एक्सेस ही नहीं है आपके पास कुछ, क्योंकि यू आर नॉट आइडेंटिफाइड एज समवन। तो QR की एक खास बात क्या रही है कि उसने ना उसको हार्ट बीट दी। तो यहाँ पे जो व्यक्ति है ये एक दुकानदार है, क्योंकि यहाँ पे 10 लोग पेमेंट करते हैं दिन में, तो फाइनेंशियल सिस्टम में हार्ट बीट आती है। नाउ यू कैन रीच आउट टू दैट पर्सन एंड डू व्हाट यू वांट टू डू। तो जो विश्वकर्मा योजना हुई और स्वनिधि योजना हुई, वो क्लासिक उस तरह से मतलब इम्पैकेबल है। मैं तो कहता हूँ कितना फाउंडेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज है, आपको पता नहीं है। जब बड़े आदमी को पैसा मिलता है तो वो बड़ा होता है, लेकिन छोटे आदमी को पैसा नहीं मिलता और सबसे महंगा मिलता है, इसलिए वो बड़ा आदमी होता है। जब देश की स्वनिधि और विश्वकर्मा जैसी योजनाएं उसको पैसा दिलवाती है ना, तब वो आदमी बड़ा होता है, और इकोनॉमी वहां से बड़ी होती है। इकोनॉमी फ्रंट से बड़ी नहीं होती, इकोनॉमी एंड से, टेल से बड़ी होनी चाहिए। तो इसी तरीके से जब हम ये बात अब पेमेंट के लिए कर रहे हैं, अगर हमें कुछ इंसेंटिव पहुंचाना है, हमें कुछ गरीब की मदद पहुंचानी है, तो या तो वही वाला तरीका है जो सम्राट अशोक ने बर्फ की सिल्ली पहुंचाई और पहुंचते पहुंचते वो इतनी सी रहेगी कि एंड में आते आते, या फिर आप डायरेक्ट ट्रांसफर करेंगे। उसके लिए वो मैजिक मूवमेंट चाहिए कि देश में एक बैंक अकाउंट होना चाहिए। एक व्यक्ति की पहचान कैसे होगी कि उसका एक बैंक अकाउंट होना, उसका यूनिक आइडेंटिफायर होना चाहिए, बैंक अकाउंट होना चाहिए, फिर मैं उसमें कुछ बेनिफिट ट्रांसफर कर सकूं। तो ये एक फोकलोरिस्ट रिवोल्यूशन नहीं है देश के लिए, ये ग्लोबल एग्जाम्पल है कि कैसे आप हंड्रेड्स ऑफ मिलियन लोगों को गरीबी से ऊपर उठाएंगे इतने छोटे स्पैन ऑफ टाइम में। इसके लिए फंडामेंटल इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है, जिसमें आइडेंटिटी और बैंक अकाउंट एज फंडामेंटल एज एग्जिस्टेंस है। जैसे मैस्लोज हायरार्की, एज आई एम श्योर यू नो दैट दिस इज द फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमिक gains, that you have to have an identity and then you have to have a account so that I have an identifier associated with yourself where I will be able to give you incentive. पहले जो ग्रांट होती थी और जो बेनिफिट और सपोर्ट होता था, वो किसके पास गया पता ही नहीं चलता था। और वो जो रेवोल्यूशन जनधन, आधार और मोबाइल के कॉम्बिनेशन जैन की ट्रिनिटी ने किया, मतलब मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि देश वीर जवानों का, अलविनों का जो कहानियां आती थी, मैं कहता हूँ देश जनधन, आधार का और मतवाले मोबाइल का ऐसा कहा जाना चाहिए, क्योंकि उसने जो चेंज लाया है ना, वो अंडर एस्टिमेटेड है। इस लाइन को हम फिर से लेंगे।
फिर से बोलिए। हाँ हाँ। नहीं, मैं जेन्युइनली बोलना चाहता हूँ। जब जब हम अपने देश के बारे में बोलते हैं और हम जब ये कहते हैं कि देश वीर जवानों का, अलवेलों का, मस्तानों का, तो जो स्टोरी है वो है ये देश जनधन का, आधार का और मोबाइल वालों का। ये है देश का क्या कहना, क्योंकि इसके बेसिस पे जो चेंज आए, जो हमारे देश में हुआ है, वो कहीं और नहीं हुआ और कहीं और होने का कोई और रास्ता नहीं है। किस तरह से आप टेक्नोलॉजी को अपने एडवांटेज में लें। पॉपुलेशन स्केल in a country where common people does not have access to so many basic things. एक तरफ भारत में स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है जिसमें टॉयलेट बनाए जा रहे हैं, एक तरफ आइडेंटिटी और बैंक अकाउंट से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो रहा है। You have to see the range of projects. You have to admire the audacity of our governments that you are solving for this as fundamental as this, and you're solving for this as economic growth fundamental as this. Right. And that is, I think, is what this country is today. Absolutely. The entire scope and the scale. And that takes a rigor of execution. मैं अपनी टीम को कभी कभार बोलता हूँ, हम अगर फ्रैक्शन के परसेंटेज में भी काम करने लगे अपने देश की सरकार की तरह से, तो हमारा क्या चेंज आएगा। जितना हार्ड वर्क हमारी, मतलब जो मैं कहानियाँ पढ़ता हूँ और जो मैं देखता हूँ, मतलब the amount of rigor and the persuasion of purpose that I see, it's genuinely inspiring. Even if I'm a private company person, I do believe मैं भी अपनी 5 महीने की सैलरी भारत को अदा करता हूँ, क्योंकि मेरे 5 महीने में पूरे देश के लिए काम करता हूँ, मैं पूरा टैक्स जमा कराता हूँ। तो मैं तो अपने लोगों से बोलता हूँ, देखो 5 महीने मोदी जी के लिए काम करेंगे, फिर अपने लिए। टॉकिंग ऑफ मोदी जी, अगर आपका बच्चा आपसे पूछे दैट पापा व्हाट आर द टॉप 3 थिंग्स दैट ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी, अगर आपका बच्चा आपसे पूछे दैट व्हाट आर द टॉप 3 थिंग्स which the Prime Minister of this country inspires you to do and strive better, what would be your answer to your child? सबसे पहले तो हार्ड वर्क। इट इज जनरली, सब लोग बहुत कुछ बोलते होंगे, बट मैंने देखा है एज आते आते लोग सब ठंडे पड़ जाते हैं। उनके अंदर एनर्जीज, उनके अंदर परसुएशन, सब लोग अपने को नॉर्मलाइज कर लेते हैं। अब हमारी जिंदगी हो गई, हमें चाय यहाँ रख जाओ, अखबार यहाँ रख जाओ और चाओ, ऐसे बोलते हैं। बट यहाँ मैं सुनता हूँ, यहाँ मैं सुनता हूँ और मैं देखता हूँ, और मैं वो एनर्जी देखता हूँ, मैं वो मूवमेंट देखता हूँ। It is extraordinarily inspiring to have that level of energy and persuasion of purpose at this age. I think that's impeccable. I wish many of us are granted like that wish at that age. And second, I would say that it is an extreme complex, जिसमें आपको नॉलेज इसकी नहीं होगी, कभी इसकी नहीं होगी, कभी आपकी नॉलेज वीक होगी, कभी दूसरे की नॉलेज वीक होगी। How do you manage this diversity? How are you able to talk to even, let's say, put us Prime Minister or President of United States, and you are able to talk to even a street person, and वो दोनों के दोनों बोले कि यार कोई तो बात थी, वो तो मतलब करिश्मा ही है, मैं यही बोलूँगा। That enigma, that persuasion, और वो मुझे लगता है लोगों में आता है जब वो अपने पर्पस के लिए कमिटेड होते हैं। जब उनको मालूम है कि मैं हर जगह एक ही चीज की बात कर रहा हूँ, तब जब मतलब कहते हैं ना ऑरा कंप्रोमाइज नहीं होता ना, वो तो अपने आप aligned thought speech action, बस right? अनकम्प्रोमाइज्ड ऑरा इज अ वर्ड, मतलब आप समझ रहे हैं कि मैं किस कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा हूँ। और तीसरी चीज तो ये है, ये विल। स्टीव जॉब्स ने कहा था, आई एम श्योर यू रिमेम्बर दैट, you can glorify them, you can vilify them, that one thing you cannot do is ignore them, because they move human race forward. देखिए, it requires a strength of a very different kind to take this purpose of moving this country forward, moving what you have inherited next level. It is not just yourself. It is you have to inspire so many around you. It is not just you have to inspire so many around you. You have to inspire the masses of this country. I think that's a true leader. Wow. Absolutely. I'm now sort of transposed in a different space. तो मैं अब अगला क्वेश्चन ही भूल गई। नहीं, मैं जेन्युइनली बोलना चाहता हूँ। मेरा एक शब्द है जो मैं ये बोलना चाह रहा था, वो मेरे से किसी ने एक स्टेज पे भी क्वेश्चन पूछा था, that what do you like about our prime minister? So I had to say this. He challenges the status quo. And that is what the big thing is. मैं जानता हूँ जब आप चैलेंज करेंगे स्टेटस क्वो को तो कोई चीज गलत होगी, लेकिन किसी के अंदर क्षमता नहीं है कि वो जो चल रहा है उसको चैलेंज कर सके और उसको अच्छा कर सके, क्योंकि उसके लिए आपके अंदर एक इंटेंट, कमिटमेंट और ये अश्योरेंस भी नहीं मिल सकती जब आप चालू करते हो कि जो मैं कर रहा हूँ वो बेटर होगा।
बट आप रेडी हो कि हाँ यार इसको चेंज करके देखते हैं क्या सही होगा नहीं. तो वो चैलेंजिंग द स्टेटस को जो चीज़ है, Uberization, sort of. Talking of that, UPI. Matlab, UPI is a truly made in India model that's now being exported to the world. Your take on UPI, given you've been so instrumental in its journey? I think the best thing about the technologies is that when they become like a ether, when they become like a air, you don't talk without this anymore. Assuming like a smartphone is so much ingrained in our life. That's exactly how the mobile payment in this country is. And I think the innovation of QR code, innovation of Soundbox, innovation of linking a bank account to the app, which is the UPI, it is lethal. It is impeccable. It challenges any other previously built system. It brings the lowest cost system in the world at a scale which is dramatically is. एक इंटरेस्टिंग बात और बताना चाहता हूँ, QR से रिलेटेड है. तो जब पेटीएम QR लगा रहा था तो हमने डिफरेंट मॉडल देखे. तो ज़्यादातर जगहों पे QR में एक मॉडल है कि आप QR दिखाते हैं, दुकानदार QR को स्कैन करता है. आपने देखा होगा सब, जब आप कपड़े लेने आते हैं तो स्कैन करते हैं, बिल बनता जाता है एंड फिर वो QR स्कैन कर लेता है. दिस इज़ द पेमेंट मॉडल ऑफ QR वर्क्स. मैंने देखा ये तो हमारे यहाँ चल नहीं सकता. दुकानदार के हाथ में इतनी कॉस्टली मशीन आएगी नहीं, इसके लिए कंप्यूटर भी चाहिए, फिर ये मशीन भी चाहिए. एंड यहाँ पे यूरेका था. मुझे अभी भी याद है, मैं बस में बैठा हुआ था, पीछे की तरफ ऐसे करके होता ना, यूँ बैठ जाते बस में. है तो यही, लेकिन ये नहीं चल रहा है पर दिमाग में. ये नहीं है, ऐसे नहीं चलेगा. यही चलेगा बट ऐसे नहीं. मैं उठा यूँ करके, हम ऐसा क्यों ना करें कि हम इसको 180 डिग्री चेंज कर देते. तो अब क्या है कि दुकानदार के पास कंप्यूटर होना चाहिए, दुकानदार के पास नेटवर्क होना चाहिए. उसकी जगह पे हमारे फ़ोन में कंप्यूटर है, नेटवर्क है, कंप्यूटिंग है, सब कुछ है. और हमारे हर एक के फ़ोन में ना कैमरा भी है. यू नो व्हाट, हर एक के फ़ोन में कैमरा है. वी आर मिसिंग दैट फैक्टर. व्हाई शुड नॉट बी लिवरेज दैट इज अ फैक्टर. सो आई सेड वो, एंड दैट इज व्हेन द QR वाज डिस्कवर्ड. सो जब पेमेंट्स की बारी आई तो QR की बारी आई और इस मॉडल की बारी आई, और उसके ऊपर जो UPI का लिंकिंग ऑफ बैंक अकाउंट हुआ, वो एक इंडिया का मॉडल है. Absolutely. तो एक्चुअली इंडिया का पेमेंट मॉडल. And we were reading about, I think G20 का जब कवरेज हो रहा था, so many countries now adopting the UPI model. I think Japan is a... Yeah, we built it for Japan also. And Masa, who's my shareholder, SoftBank Japan, I remember in 2018, he was mid of June of 2018, he talked about it that, Vijay, we have 2020 Olympics and it seems payment is by QR. And as SoftBank, we want to do it. Will you do it? And मेरे अंदर ये हमेशा की इच्छा रही है कि हमारे देश का झंडा ना ऐसे कंट्री में जाके गड़े जो डेवलप्ड कंट्री हो. मतलब वहाँ देखो, अमेरिका और जापान में बोलना कि हमारे देश की चीज़ें एक डिफरेंट चीज़ है, और कहना कि मान लीजिए अफ्रीका या फिर इंडोनेशिया में क्या वो डिफरेंट चीज़ मानी जाती है. तो मैं तो एकदम से कहूँगा वी विल डू इट. बट मेरे बोर्ड ने मेरे को बोला कि क्या बात कर रहे हो, यू हैव सो मच हैपनिंग इन इंडिया एंड आई होप यू अंडरस्टैंड दिस इज अ डिफरेंट लैंग्वेज कंट्री, इट इज़ नॉट ईजी. सो बट आई सेड कोई नहीं करनी है, इंडियंस है, we will find a way. We'll find a way. And I want to tell you one of the interesting things. The PayPay in Japan was launched in 90 days flat. 90 days, 3 months. In June we discussed, July first week we started, and October 4 is the launch officially of it. 29 September, July, August, September, we had the beta in the hand, and 4th October we launched it. In a country where we do not know the language, in a country where our team has to learn the nuances of APIs and systems, and working with a team that you've never worked in the past. And I think we were able to launch it. We were not only able to launch it, it is right now the #1 payment company in Japan. Can you believe what is the market share it has? Tell us. 3/4, 75%. Really? PayPay is 75% market share in QR payments in Japan. And we are shareholders. And Masa SoftBank is a shareholder. You can go and Google it. And the beauty is that Masa says this also. Then I'm very happy that an Indian technology does it. Yeah. So हमारे देश की टेक्नोलॉजी जापान में जाके पेमेंट चला. Wow. ये मेरे लिए बहुत ही फख्र की बात है, और मैं ये बताना चाहता हूँ
I want to say this, that India's technology is only underestimated because India's technology doesn't have a label. Ultimately, we do it as IT services, we do it as IT companies, but when we do it as a product, we make India proud. We take India's label ahead. That's such a... IT manufacturing, IT services is a contract manufacturing. Making product in this country is owning the global brand. I believe by 2030, when we all will go different part of the world, जब हम देखते हैं कि ये जापानीज कार है, ये कोरियन कार है, ये जर्मन ये है, ये मशीनरी है, इंडिया की टेक्नोलॉजी आपको बाहर. Now you've already started that pipeline. मेरा तो बहुत ही मेरा I've said it a number of times, and the final aim is that. The final aim is that take the India's flag, and then when you land in that country, then you say, you know what? It's an Indian company. Absolutely, and it's a great example for Made in India, because जब हम लोग Make in India या Made in India सोचते हैं ना, we imagine some factory से कपड़ा निकल करके आ रहा है. कोई बात नहीं, वो उस टाइम की जरूरत थी, वो उस टाइम का मैजिक था. आज का मैजिक सॉफ्टवेयर में, आपका आज का मैजिक टेक्नोलॉजी में. Fintech. हमारी टेक्नोलॉजी को देश और दुनिया में पहचान होती है हमारे देश की टेक्नोलॉजी की. Absolutely. What India has given us is an opportunity that we can talk to the world that we built it in this country. Right. We make this country. And talking of contextualizing the technology, the Soundbox that you have, आपके Paytm wallet में इतने पैसे जमा हो गए. How do you see that as probably a very, very big revolution in the way people deal with money in India? So when we launched this QR, and it was in Hyderabad, where my teams told that this bunk, they call it petrol pump ko bunk bolte hain. This bunk has removed the QRs. And I was like, why? Because lot of students came who made fake apps, and then they showed that they have made a payment, and the payment was not settled because the payment was not made. And then I heard this in Bangalore. And then I was a little spooked. Kya kare? It happened with me now that I was in Delhi on a Mother Dairy booth. Mother Dairy booths are operated by ex-army men. And they have this feature phone as their official phone, while they may have personal phone or whatever. So मैंने दूध लिया सुबह और मैंने पेमेंट कर दी. मेरी पेमेंट के बाद मैंने बोला डन, तो वो कहता है रुक जाइए आप. एंड वो जो दूसरे कॉइन के दूध दे रहा होता है वो वाला दे रहा है. मैं बोला सर मैं जाऊँ क्या, आप रुक जाइए, मुझे देखना है. तो मैं दिखाया कि कहाँ देखना है, आप मुझे दिखाएं. तो उसने बस इशारा करा कि देखो फ़ोन रखा हो ना वहाँ देख. तो मैं दूर से देख रहा था, फ़ोन पे लगा था इनबॉक्स फुल. ये भगवान, आई एम अ टेलीकॉम इंजीनियर, 10 साल टेलीकॉम की करी. आई वाज लाइक, नंबर 1 द इनबॉक्स इज फुल, नंबर 2 द इनबॉक्स डिलीटिंग SMS विल नॉट क्विकली ब्रिंग द SMS नेक्स्ट, एंड आई विल हैव टू टेल हिम कि ये मेरा वाला मैसेज है. तो आई सेड सीरियसली आप इसके अंदर से चेक करोगे? कहता हाँ भाई साहब देखना तो पड़ेगा ही ना, कभी कभार क्या होता है कि पैसे दिखते नहीं है. तो मैं ऑफिस गया, मैंने कहा बॉस हमारा ना प्रोडक्ट, अब हमारा ना मार्केट रजिस्ट कर रहा है प्रोडक्ट. You know, there is a initial success and then optimization, then the market is resisting. It is finding the limitations of the project. And we need to make an arbitration device between merchant and consumer, which will speak the language of both. And that will say the payment is done, not neither consumer nor the merchant will say. तो पीछे लोगों ने फिर एक, आपने याद नहीं होगा, उसमें जब पेटीएम के पोस्ट पेमेंट स्क्रीन उसमें लिखा हुआ आता था tap here to make a call to the merchant that payment has been completed. हमने लिखा वो, बट ना तो कस्टमर को मालूम ना मर्चेंट को मालूम कैसे कंफर्मेशन आ सकता है, तो वो सॉल्यूशन नहीं बना. फिर हमने कुछ लोगों को टीवी स्क्रीन दिए, फिर हमने लोगों को ज्ञान दिया कि देखो स्मार्टफोन पे ले लो, लेकिन हर बंदे के पास स्मार्टफोन नहीं था. अब स्मार्टफोन जिसके पास है वो जेब में लेके स्कूटर पे कहीं घूमने गए हैं, भैया तो वो है नहीं, आप ना कैश दे जाओ. तो यार मैं कहा यार ये तो बिल्कुल नहीं चल रहा. मतलब हमने यूरेका करके डिस्कवर तो कर लिया, बट ये तो रुक गया मार्केट में रिवॉल्यूशन. तो हमने वन थिंग लीडिंग टू अदर, द डिमांड वाज दैट इट हैज टू बी अ लोकल लैंग्वेज बिकॉज आई कुड फिगर आउट नाउ. सो वी डिड SMS सेंडिंग टू अ प्रिंटर ऑल्सो, दैट प्रिंट आउट निकला. मैं आपको बता देता हूँ, वो गोवा के एक पेट्रोल पंप पे था और मैंने जाके एक्सपेरिमेंट भी करा था कि वो क्या कर रहा है, क्योंकि हमने वहाँ लगाया था. तो वहाँ पे प्रिंट आउट आया एंड देन ही बिलीव्ड कि पेमेंट हो गया. तो मैंने कहा यार ये चल जाएगा, लेकिन फिर वो पेपर रोल, प्रिंटर की डिले, SMS, I was like, this is not solving it, man.
And then this requirement spec sorted out into a requirement that it has to be a BlackBerry-like push email, like an instant, and it should be in a local language, and it should say it Paytm पर 50 रुपये प्राप्त. And और हमने बना लिया. अब इसमें सिम कार्ड भी अलग से लगा दिया जिससे कि ये प्रॉब्लम ना हो कि उसका जो व्यक्ति फोन वाला है वो कहाँ चला गया. हमने सिम कार्ड भी लगा दिया, सब कुछ लगा दिया, हमने रख दिया साउंड. अगेन नोएडा में एक्सपेरिमेंट करा, ठीक ठाक चला. हमारी सेल्स टीम में मना कर दिया कि दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क. अच्छा. बिकॉज पेमेंट होते फ्री, इसके तो लगते हैं पैसे, क्योंकि इसमें सिम कार्ड भी था. दुकानदार कहता है सर, तो दुकानदार क्या कहता है ये मुझे पता नहीं, लेकिन मेरी सेल्स टीम ने मना कर दिया था कि साउंड बॉक्स विल नॉट वर्क. एंड आई वाज लाइक ओ माय गॉड. तो जब भी कभी कहीं किसी को प्रॉब्लम होती थी हम उसको साउंड बॉक्स देते, सर आप इसको ले लीजिए 100 रुपये हमारी तरफ से, मतलब इसका जो खर्चा है वो हम नहीं चार्ज. देन की जैसे कहते हैं आवश्यकता है आविष्कार की जर्नी है. तो उस मूवमेंट में कोविड में लॉकडाउन हुआ, और लॉकडाउन के बाद जब दुकानें खुली तो दुकान पे एक व्यक्ति अलाउड है. तो दुकान पे एक व्यक्ति अलाउड है, पेमेंट कौन लेगा, और सब लोगों को करेंसी और प्लास्टिक स्प्रे हो रही थी. हाँ. तो हमने जाके उनको बताया कि सर ये रख लीजिए. तो दुकान का जो गल्ला था वो बाहर रखा हुआ था, और अंदर भाई साहब कुछ निकाल के आ रहे थे, पेमेंट हो गई. वहां से इसने टेक ऑफ किया. सो द टेक्नोलॉजी वाज इनोवेटेड इन 2019, but it got discovered in 2020. And at COVID, and then we were able to teach and preach the merchant the advantage of it. One thing leading to another. In fact, the industry did not believe it will work. So that's why if you notice, इसकी जो कॉपी आई वो 3-4 साल बाद, क्योंकि इस मॉडल में कौन पैसे देगा का कॉन्सेप्ट. बट आई थिंक जो आपने बोला, उसकी जो नीड है, उसकी जो इनोवेशन है, अब सब्जी वाला भी आराम से रख लेता है. अब सब्जी वाले की दुकान पे उसकी वाइफ या उसके बच्चे, कोई भी जो वहाँ पे बैठा हुआ है वो भी कहता है भाई साहब हो गया. तो अब इंडिया में मोबाइल पेमेंट पहले फास्ट था, अब सुपर फास्ट. क्योंकि अब पेमेंट करते हो दूर से देख के आप चले जाते हो. सो आई एम वेरी हैप्पी एंड प्राउड दैट वी हैव इनोवेटेड नॉट जस्ट QR बट ऑल्सो साउंड बॉक्स. एंड नाउ दिस इज, I would say, the way the India's payment will be known for. It has solved for reconciliation. It has solved for this. हमने अब इस पे बहुत सारे मॉडल बना दिए हैं. जैसे कि उस पे कार्ड टैप भी लगा दिया है, कार्ड लगा सकते हैं आप. जैसे हमने उसमें म्यूजिक भी लगा दिया, ब्लूटूथ भी लगा दिया है, तो गाने सुनिए, क्रिकेट कमेंट्री सुनिए. तो हमने अभी क्रिकेट कमेंट्री भी डाली है, सो यू कैन लिसन टू द क्रिकेट स्कोर्स, अपडेट्स, tons of things. In fact, one of the project that I'm running right now is giving an extra battery and LED. क्योंकि आप जाके देखते हो तो वो LED लेते हैं शॉपकीपर्स. हाँ. मैं AC में लगा दो यार, वो अलग से रेंट देता है. So we are basically believers that हमारे देश की टेक्नोलॉजी की जरूरत है, हमारे देश की कंपनियां ही पूरी करेंगी. जब हमारे देश का स्टूडेंट, जब हमारे देश का एंटरप्रेन्योर अपने देश के लोगों के लिए काम करता है तो हमारा देश आगे. तो ये एक अपॉर्चुनिटी है. और मैं बार बार कहता हूँ कि इंडियाज golden moment is when you are serving the hundreds of millions, when you are serving the last mile. लोग कहते थे कि यहाँ पे पैसे नहीं बनते, लोग कहते थे कि यहाँ पैसे नहीं बनते, और ये छोटी छोटी दुकानदारों से क्या ही पैसे लेके आओगे. और मैं कहता हूँ हमारा जो रेवेन्यू आप अगर देखेंगे तो जो बना हुआ है वो उन्हीं लोगों के बेसिस से बना हुआ है. तो as you said, tail end of the, how do I say, tail end of the society, वहाँ से economy. मेरा मानना है कि टेक्नोलॉजी की एक ऑब्लिगेशन है दैट यू हैव टू हेल्प दैट लास्ट माइल इन द बिजनेस. यू हैव टू हेल्प दैट last person in this country, and you have to help his contribution to become the success of this country. That time this country progresses. In fact, the mission that we've taken at Paytm is actually this, that we will bring 500 million Indians to mainstream of economy. मेरा मानना है कि बड़ा आदमी तो इस देश में 10 तरीके से जानता है बड़ा कैसे बनना होता है. वो छोटा आदमी है जिसको कि नदी को पार करवाना हो, और अगर वो हमारी टेक्नोलॉजी और हमारी एप्लीकेशन, हमारी सिस्टम कर जाए तो what else to do? Absolutely. So, in fact, कल रात की बात है, कुछ खाना बनने वाला था तो somebody said अच्छा चटनी बना देते हैं. And then my cook, she was like हाँ मैं धनिया ले आती हूँ नीचे से ठेले से. तो जब तक वो गई और वापस लेकर आई तो मैंने कहा तुम पैसे नहीं ले गई. तो कहती अरे कहाँ देती, 15 रुपए की धनिया पेटीएम कर दिया मैंने. And I was telling my husband कि you know I am going to interview the guy who founded Paytm because this is
revolutionary. And she said, मैंने कहा मैंने 15 रुपए, कहती कहाँ आप छुट्टा तोड़ोगे 100 रुपए में, आप भी मेरे को पेटीएम कर देना. This is really big. I also want to tell you one thing, that it is another thing that as an entrepreneur who's listening this should know. When we started, it was said that this is not useful because people make 15-20 rupees payment. मेरे से किसी ने पूछा एक जगह पे एक फाइनेंशियल इंडस्ट्री के व्यक्ति ने, हाँ, 10 रुपए का एवरेज टिकट साइज. हाँ, मैंने बोला सर 107 108, कितने इससे क्या फर्क पड़ा, ये तो छोटा अमाउंट, बड़ा जब होगा तब सब लेंगे. मैंने कहा सर यही तो गलती है, जब छोटा है तो मैजिक है, बड़ा तो हर एक कोई कर लेता है. जब छोटे पेमेंट में जिस आदमी के पास कम ही पेमेंट मिलता है वो ट्रस्ट करने लग जाए कि आपके प्लेटफॉर्म से पैसे प्राप्त हो गए हैं, और एक कस्टमर छोटे पेमेंट को करने लगे और छोटा अगर वो जो दुकानदार है उसको इससे प्राप्त कर लगे, तब है ना रेवोल्यूशन. absolutely. And that is, I also want to take this to an opportunity to say the next thing, that this is brewing a next revolution right now in the country, and that's called mobile credit. Mobile credit. All these shopkeepers, all these small entrepreneurs of this country haven't had access to formal credit. And I think the wealth is created when you have access to credit. As you understand, nobody has their own money inherited. And payment flow, that how much money you receive in every day, you can underwrite that. So banks can underwrite that and give the money. So mobile payment, if mobile payment is a revolution, mobile credit is a dividend of it. Okay. That's probably the next big story. In 5 years, this country's credit access to credit at that level will bring a very big change in economy. And it is brewing, it is seeing, and this is exactly what I was saying, that Swaridhi or Vishwakarma Yojana, they are so impeccably impactful that they are underestimated. Right. Talking of economy, as an entrepreneur, as an innovator, where do you see the Indian economy going with Prime Minister Modi's leadership in the next few years or decade or so? 75 साल लगे 2.5 ट्रिलियन बनने में, 7.5 साल के 2.5 ट्रिलियन कैसे लेंगे? कुछ और कहने की जरूरत. I was going to say that's the shortest and the sweetest answer that you've given to me. और देखिए, कंपाउंडिंग का फायदा है, इम्पैक्ट सही डायरेक्शन सही दिशा में जाने का फायदा है, रिगर एनर्जी का वादा है, and the persuasion on the purpose का कमिटमेंट है. We've talked about economy. If we were to talk about, say, India 2014, India 2013, don't give me schemes related to digital India or the economy or finance, but what are your favorite, say, couple of other big mission mode projects that you see have really revolutionized the way small retailers or small businessmen, but सबसे ज़्यादा उनका impact हुआ. Okay, let me reframe this question. So we've spoken about economy, fintech, digital India, Jan Dhan. Tell me, and you spoke about Swachh Bharat Abhiyan as well, but tell me 2 or 3 big other schemes or changes that you think गांव देहात में आया है. देखिए, कोविड हुआ, आपको याद होगा, एक बूंद जिंदगी की पल्स पोलियो अभियान होता था. इस देश का सबसे बड़ा और दुनिया के लिए वो सबसे बड़ा एग्जाम्पल था हाउ टू मैस डिस्ट्रीब्यूट मेडिसिन. पल्स पोलियो हैपेंड ओवर द मल्टी इयर्स. कोविड हैपेंड, वैक्सीनेशन. I cannot believe it. I mean, if we are talking about fintech or payment revolution, I think one of the most understated revolution that happened, and then we are standing healthy and wise around that, is actually the vaccination revolution, the National Health Mission. I cannot believe that we do not realize it. I love this part that we as Indians now take it for granted. And that is the beauty about the expectation and deliveries, as they say it, कहा है और करा है और करके दिखाया है, that we were able to do 250 crore vaccinations in such a short span of time, in such a meticulous method. देखिए, सप्लाई भी है, एग्जीक्यूशन, कहीं भगदड़ नहीं मरी, कहीं लोग मरे नहीं, कहीं ये नहीं हुआ. I mean, मैं आपको बता देता हूँ, ये पब्लिक हेल्थ का जो एग्जीक्यूशन था ना, इसके बारे में तो हम जितना फ्रैक्शन में बात करते हैं, क्योंकि ये एक तरह का ना एक फ्लैश में हुआ. इसकी ब्यूटी थी कि फ्लैश में हुआ, और इसकी दुख की बात यह है कि लोगों को दाजरी लगा के फ्लैश में हो गया.
ये एक फोटोग्राफर की ये फ्लैश जो मैजिक करती है किसी फोटो में, ये वो वाली चीज़ है। मेरी नज़र में नेशनल हेल्थ मिशन एक मोस्ट अंडररेटेड प्रोजेक्ट है, और उसके अंदर जो हमारी स्कीम्स हैं, पेंशन से लेके जो उसमें हेल्थ की मिशन है, वो आयुष्मान भारत योजना, ये अंडर एस्टिमेट। ये जब आप जाते हो शहरों वगैरह में ना, तो मैं जब अलीगढ़ एटा के रास्ते में जा रहा था तो मैंने वहाँ पे देखा कि आयुष्मान भारत की इंश्योरेंस भी यूज होती है, 5 लाख रुपए तक का कैश। एंड शॉर्ट, वी इन बिग सिटीज मे नॉट बी टॉकिंग एंड अंडरस्टैंडिंग दैट, बट अ लोकल डॉक्टर अंडरस्टैंड्स इट, leverages it. And that I think is one of the most understated. In my opinion, that is definitely one of the most. That's a very smart answer, actually, because vaccination, indeed, the scale at which it happened in a flash. The beauty, it happened in a flash. And the awkward thing is that it is not known because it happened. And as you said, it's a good problem to have, to take it for granted that your public health infrastructure is in place. That is what I want to tell you. I mean, as you know, that the most basic things that government, as citizen, we expect for the government to do are these kind of things, which are government scale things. They cannot be done by private sectors. Yeah. You know, you cannot have your own vaccine to source and give it. And that is so meticulously well done. Right. And so I take that. And then I talk about this 5G revolution. I'm a technology person, so I understand. एक milestone आया 2 दिन पहले ही मैंने पढ़ा कि with number of towers जो देश में 5G की लगी हुई हैं, that makes India the number 1 country in the world. In the world? In the world. But none of the country in the world has so many towers or the reach of 5G. ये जो कोना और हर कॉर्नर में जो access to the again टेक्नोलॉजी है जिसको कि हम 5G कह रहे हैं, ये हम अंडर एस्टिमेट करते हैं। ये ना एक तरीके के एक्सेलरेटर होते हैं, ये ना एक तरीके के कैटलिस्ट होते हैं। एंड यू हैव इट, देन यू डोंट अंडरस्टैंड। इसकी वजह से कितनी इंडस्ट्री चेंज हो रही है। आप अगर हम बात कर रहे हैं इस टाइम पे, पहले एक टीवी चैनल के लीनियर प्रोग्रामिंग के अंतर्गत ही हम इसको फंसा पाते, अब इसको हम दिखा पाएंगे और जब जो देखना चाहेगा देख लेगा, और ये वहाँ पहुँच जाएगा जहाँ ना पहुँचे, कभी वहाँ पहुँचे हमारा मोबाइल का रवि, तो वो वाली बात हो रही है। तो अंडर एस्टिमेशन है वो। अगेन मैं ये बोलूंगा कि अंडर एस्टिमेशन है। बिग पोटेंशियल। यस, जिसकी ये बेसिक इंफ्रा है, दिस इज फाउंडेशनल इंफ्रा। सो वेदर इट इज रोड, like I told you, the physical infra, the digital infra, the financial infra, the health infra, I think these are the foundations. And this is exactly what gives you the confidence that there can be change. Like, absolutely. मैं तो ये देख रही थी कि I had prepared all these questions, which I never ended up asking because I think we've had a very, very organic conversation. So maybe my last 2 questions. Where do you see Paytm going in the next year from now? So we are sitting in October 2023, October of 2024. What are your predictions for Paytm and what are your predictions for India? First of all, for India, I'd say business as usual. No change. That's it. Okay. And for Paytm, I have only one thing to say, that we would be stronger, better, making more money, serving more number of customers, making India more proud. Thank you. I think no other questions. I'll let you go now, but thank you so much for joining. And this has been, I can probably be biased now to say that this is the podcast I've enjoyed the most hosting. Thank you so much. Thank you. Thank you for your time. So here we are after a delightful and an insightful conversation with the Paytm founder as we delved into the journey, the vision and the remarkable fintech landscape in India. Now, before we wrap up, we want to hear from you. Your thoughts, your questions, feedback does matter. So continue to engage with us on all our social media channels. Follow us on Twitter, Facebook and Instagram and stay updated on our latest episodes. Till then, stay safe and be happy.